Hello everyone, welcome you all at India's largest online learning platform. So let's start with a brief introduction about myself. My name is Ravi and I have 8 years of teaching experience in the field of GATE and English Services examination. Right, I have qualified GATE 5 times and I have also qualified State English Services examination Uttar Pradesh and some Markana PSUs also like NTPC, SAIL, BHL, Coal India Limited and some other PSUs like Damodar Valley and Airports Authority of. First of all, you all need to download this Unacademy learning app. Unacademy learning app. And after downloading this app, you need to get your subscription. And after getting subscription, you will get daily live classes, live test and quizzes, structured courses, unlimited access. What is the benefit of daily live classes? Okay, आपको अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस भी मिलती हैं और उसके साथ साथ रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल कराए जा सकते हैं जिसको आप कराए जाते हैं जिसको आप अपने टाइम और कंफर्ट के अकॉर्डिंग कभी भी कहीं से भी देख सकते हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं नाउ but what is the benefit of daily live class right you can ask your doubts to your educator you can discuss your doubts related to the topic आप chat कर सकते हैं comment section में अपने doubts पूछ सकते हैं that कहने का मतलब है that will be a full interactive class that will be a full interactive class. Right apart from this you will also get live tests and quizzes. Okay, to evaluate yourself, to evaluate your preparation for any competitive examination, you need to participate in the test and quizzes. Okay, you can do that to evaluate your preparation कि आपकी जो preparation है competition में कहाँ stand करती है आपको कहाँ पे भी और अभी improvement की जरूरत है that you can all uh, evaluate. Structured courses, whatever examination you are preparing for, whether it is GATE or engineering sciences examination, the GATE or engineering sciences examination. जो कोर्सेज हैं अनअकैडमी पे वो आपके सिलेबस और एग्जामिनेशन के पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके यू विल गेट चांस टू लर्न विद अदर टॉप एजुकेटर्स अक्रॉस इंडिया बैचेस एंड ईयर लॉन्ग कोर्सेज जो थ्रू आउट द ईयर जो कोर्सेज चल रहे होते हैं अनअकैडमी पे अलग अलग ब्रांचेस के लाइक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल CSIT इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन केमिकल इन सब के लिए अलग अलग नंबर ऑफ कोर्सेज रन करते हैं थ्रू आउट द ईयर ओके like there are 24 courses of mechanical 18 courses for electrical ऐसे करके थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्सेज रन करते हैं आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी बेनिफिट्स हैं उसको आप अवेल कर सकते हैं नाउ the important thing is there are two kinds of subscription that are available one is the plus subscription other is the iconic subscription plus subscription में आपको मिलता है that is India's best educator interactive live classes structured courses and PDFs okay and live test results है ये सारी चीजें आपको आइकॉनिक में भी मिलती है जैसे बेस्ट एजुकेटर इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पीरियड लाइव टेस्ट बट अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल आल्सो गेट पर्सनल कोच यूनिक फीचर ऑफ iconic subscription is that you will get a personal coach and with your personal coach you can have one-to-one discussion with your personal coach you can have one-to-one discussion about regarding your doubts regarding the strategy planning किस सब्जेक्ट पे आपको कितना फोकस करना है किस सब्जेक्ट के किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है ऑल दीज थिंग्स यू कैन डिस्कस विथ योर पर्सनल कोच और एजुकेटर राइट इसके अलावा जो आपकी टेस्ट एनालिसिस होगी दैट विल आल्सो बी पर्सनलाइज्ड यू विल गेट स्टडी प्लानर यू विल गेट प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल आल्सो the fee structure है the fee structure for the fee structure for plus subscription of course for plus for 24 months the fee is 44,000 rupees only for 18 months 12 months 6 months बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं लेकिन अगर आप 6 मंथ या उससे ज़्यादा का कोर्स लेते हैं तो देयर विल बी नो कॉस्ट EMI is also available no cost EMI is available for okay? But if you use this referral code okay, this is your referral code if you use this referral code WPY you will get 10% discount you will get 10% discount and ultimately you have to pay 39,600 only for 24 months. For 18 months, you have to pay 34,600 for 12 months, 6 months. आपके लिए ये जो कोड है, this code is valid for any course, your any subscription you are taking.
For iconic subscription, दो कोर्स अवेलेबल है 12 months and 24 months. For 12 months the fee is 50,250. For 24 months the fee is 74,000 rupees. For 12 months this is 55,000. For 24 months this is 6,600. After using this code, referral code Ravi PY, you will get 10% discount, and these are the fees that you have to actually. So I hope you got the point and you will get your subscription as soon as possible. You should go for iconic subscription. जो भी आपको suitable लगता है वो ले सकते हैं, plus या iconic. But you should go for iconic subscription because here you will get a personal coach, a personal guidance, and that will help you in securing a better rank. Right, securing a better rank. Not just selection, but securing a better. Okay, so let's start with the session. We are discussing thermodynamics revision to the problem. We have already discussed whole thermodynamics subject. We have already discussed the subject in detail. That is available at this channel, Engineering Live. This subject thermodynamics is available at this channel, Engineering Live. जो आप देख रहे हैं इस पे आप playlist find कर सकते हैं. Apart from this, you can also find that on Unacademy learning. Right, on Unacademy learning. You can also find that on Unacademy. That we are going to start. अगर आपको लाइव देखना है यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, तो आपका सेशन है थर्मोडायनेमिक्स. लाइव अगर आपको देखना है तो यू कैन राइट ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. You can find me there by the name Ravi Prakash, and you can follow me there on Unacademy learning app, and you can watch the live lectures on thermodynamics that I'm going to start from tomorrow, that is from 5th of January, right? From 5th of okay, so now let's start with the station. तो मैंने आपको बताया था कि रिवीजन की प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए. दैट वी हैव डिस्कस्ड प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर रिवीजन, दैट वी विल गो फॉर द कंसेप्ट्स. एक ब्रीफ में आप जल्दी एक बार नोट्स रिवाइज करेंगे. कंसेप्ट्स, फॉर्मूले, जो भी आपने फॉर्मूलाज पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ने का है आपको एजम्पशन विथ एजम्पशंस, आपको एजम्पशंस भी रिवाइज करनी है. एंड देन फॉर्मूले की वैलिडिटी भी देखनी है. जो फॉर्मूला पढ़ा है, जो कंसेप्ट पढ़ा है आपने, उसकी वैलिडिटी क्या है, उस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट, ये सब हम क्विकली रिवाइज करेंगे. एंड देन वी विल सॉल्व सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम. मैंने आपको बताया था कि सिर्फ जनरली लोग करते क्या है, प्रैक्टिस. व्हाट पीपल डू, दे गो फॉर द कंसेप्ट, रिवाइज करते हैं जल्दी से, या फिर ये भी नहीं करते, दे ओनली गो फॉर फॉर्मूले. मतलब आप फॉर्मूला पढ़ लिया अपने रिवीजन के टाइम पे, ओके. या फिर कुछ लोग सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, दे डोंट गो फॉर प्रैक्टिस प्रॉब्लम. राइट, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच. क्योंकि होता क्या है, किसी भी प्रॉब्लम, क्योंकि आपका जो गेट एग्जामिनेशन है फॉर गेट 2021, यू नीड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच चाहिए होती है आपको, और उसके लिए आपको जो सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स या कोई भी सब्जेक्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स जो भी आप पढ़ चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट्स का एक फ्लो होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक अप्रोच होती है और प्रॉब्लम्स को डील करने की, उनको अप्रोच करने की, प्रॉब्लम्स पे अटैक करने. होता क्या है कि जब आप सब्जेक्ट्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स बैक आपने पढ़ा होता है, तो आपकी जो फ्लुएंसी है, राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच होती है, दैट इज वो आपका फ्लो में नहीं होता. फ्रॉम हियर यू विल गेट द फ्लो ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट. इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, मैंने आपसे बताया था, दैट विल बी टेक 10 to 15 प्रॉब्लम्स. और थियोरेटिकल टॉपिक है तो थियोरेटिकल, अदरवाइज न्यूमेरिकल टॉपिक है तो विल टेक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर टॉपिक. 10 to 15 प्रॉब्लम्स पर टॉपिक दैट वी विल टेक एंड डिस्कस. इससे क्या होगा कि आपका फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी आपको समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट भी आपके क्लियर होंगे, और जो आपका फ्लो है सब्जेक्ट को रिवाइज, जो सब्जेक्ट को लेके, उस सब्जेक्ट को लेके जो आपका फ्लो है, राइट,
उसकी आपकी फ्लुएंसी बन जाए उसकी आपकी फ्लुएंसी। तो लेट्स सी, ऑलरेडी हमने दो टॉपिक रिवाइज कर लिए हैं, बेसिक कंसेप्ट एंड वर्क ट्रांसफर थर्मोडायनेमिक्स का। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हीट ट्रांसफर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हीट। हीट ट्रांसफर स्टार्ट करने से पहले हमें जो इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है इस चैप्टर में, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, प्रीवियस लेक्चर में भी देख लिया था। दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? हीट ट्रांसफर के ज्यादातर क्वेश्चन आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सॉल्व होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने क्लास में भी इसको डिटेल में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में भी इसके अलग अलग फॉर्म देख लिए थे। आज मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट हम दैट इज डी प्लस डेल डब्ल्यू या फिर डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी टी। ओके, और भी अलग अलग फॉर्म थे आपके यहाँ पे, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू या फिर डी ई प्लस डी। अलग अलग सबकी वैलिडिटी थी, कौन सा फॉर्मूला किसके लिए वैलिड था, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, क्लास में भी डिस्कस किया था। और रिवीजन का जो टॉपिक है उसमें मैंने डिस्कस किया था, अलग अलग फॉर्म आपको बता दिए थे। इसके अलावा जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स था, सिग्मा क्यू इक्वल्स टू सिग्मा डब्ल्यू, दिस वाज फॉर साइकिल and this was for process. This was for a type. अब कौन सा फॉर्मूला इसका रिवर्सिबल के लिए, कौन सा रिवर्सिबल के लिए, दैट वी हैव ऑलरेडी टेकन इन द प्रीवियस लेक्चर। बट डी कब होता है, डी यू कब लेते हैं, जब आपका सिस्टम स्टेशनरी, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। दिस इज योर मोस्ट जनरल फॉर्मूला। इसमें अगर आपने सिस्टम को स्टेशनरी कह लिया तो डी की जगह आप डी यू लिख लेते हैं। अगर आपने कह दिया कि प्रोसेस सिर्फ रिवर्सिबल के लिए है तो आप डेल डब्ल्यू के लिए पी डी बी लिख, पी डी बी लिख दिया, डेल डब्ल्यू की जगह आपने पी डी बी यूज कर दिया। दैट मीन्स दैट इज दैट फॉर्मूला बिकम्स ओनली फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन ये जो फॉर्मूला लिखा आपने पहला, जो फर्स्ट फॉर्मूला लिखा आपने, दिस इज मोस्ट जनरल फॉर्म और ये सबके लिए वैलिड है, फॉर वैलिड फॉर एनी प्रोसेस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ओके, बट दिस शुड बी द प्रोसेस। ये आपका साइकिल के लिए है एंड दिस इज फॉर द, ये हमने पढ़ लिया था, इसका भी हमें आज यूज करना है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द हीट ट्रांसफर। व्हाट इज हीट ट्रांसफर? नाउ व्हाट इज हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर इज, व्हाट इज जो हीट ट्रांसफर बाय डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? व्हाट इज हीट ट्रांसफर? व्हाट इज हीट ट्रांसफर? राइट, वी कॉल इट एनर्जी ट्रांसफर because of एक थर्मल एनर्जी ट्रांसफर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, बिकॉज ऑफ दो बॉडी के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसकी वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है दैट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी और फिर हीट ट्रांसफर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। बाकी डिटेल हमने क्लास में पढ़ा हुआ, वो लेक्चर आपके पास अवेलेबल है, दैट यू कैन वॉच। दैट इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा, where C is specific heat, where C is specific heat, right, where C is specific heat, that is equals to mc delta t and C is specific. Okay, now what is specific heat? अगर आपको यहाँ से डिफाइन करना हो specific heat, Q by m delta, अगर आपने ले लिया if m equals to 1 kg, right, और delta t equals to यूनिट डिग्री से 1 डिग्री ले लिया केल्विन। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो केल्विन डिग्री सेल्सियस आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स दैट केस इज, इन दैट केस आपको हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल, दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट। सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे बन गई कि स्पेसिफिक हीट की, स्पेसिफिक हीट इज अमाउंट ऑफ किलो जूल पर केजी केल्विन, यूनिट होगी, यूनिट इज किलो जूल पर केजी, heat is kilojoule, m is kg, Kelvin, delta T is Kelvin.
किलो जूल पर केजी केल्विन। नाउ किसी भी सब्सटेंस का के यूनिट मास, 1 kg मास का टेम्परेचर डिफरेंस, राइट, टेम्परेचर डिफरेंस, या फिर कहते हैं कि उसका टेम्परेचर यूनिट डिग्री से बढ़ाने के लिए, यूनिट डिग्री से उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितना हीट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, दैट अमाउंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। कोई गैस है, उस गैस का 1 kg मास है, उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर 1 डिग्री केल्विन से इंक्रीज करना चाहते हैं, दैट द टेम्परेचर डिफरेंस इज देयर, तो आप उसको डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन में कोई भी लिखेंगे, दैट विल बी सेम। ओके, तो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, अगर आप किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास है, कोई गैस है, उस गैस का 1 kg मास है, उसका टेम्परेचर आप यूनिट डिग्री यानी 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना चाहते हैं, तो जितना हीट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा उसे ही आप कहते हैं दैट इज आवर स्पेसिफिक स्पीड, सॉरी स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, दैट इज आवर स्पेसिफिक। अभी जो स्पेसिफिक हीट होती है, दो टाइप की स्पेसिफिक हीट पड़ते हैं, राइट। एक सीपी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume, specific heat at constant volume, constant pressure and constant volume। आपसे कहा जाता है Cp is greater than C, जो Cp है, Cp is greater than, ऐसा क्यों? ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, Cp is greater than Cp और Cv, सॉरी, और Cp by Cv को हम कहते हैं, Cp by Cv is gamma, that is adiabatic index, at Cp by Cv is gamma, रेशियो है Cp by Cv का, that is a constant, that is, we'll see that later on, gamma। But now the real question is why Cp is greater than Cv। इसको मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा क्यों है कि why Cp is greater than Cv। So I will explain this once again, I hope you will get this point this time। Okay, why Cp is greater than Cv? Now let us consider, a container, let us consider now, here is a piston cylinder arrangement है, piston, this is our piston, here this is our piston also, but piston cylinder arrangement here, in both cases this is a piston cylinder arrangement, लेकिन आपने यहाँ पे स्टॉपर लगा दिया, तो दूसरा केस उसमें आपने स्टॉपर लगा दिया। अब मैंने आपसे सपोज कि मैंने आपसे कह दिया कि दोनों में सेम गैस है, सिमिलर गैस है, राइट। सपोज कि यहाँ पे भी कोई गैस है और यहाँ पे भी, दोनों का जो मास है 1 kg, here the mass is also 1 kg। now if I say, आप इसका जो टेम्परेचर है, जो भी गैस A है, this is gas A, in both case the gas is same, the mass is same, mass is 1 kg, gas is A। इस गैस A का 1 kg मैंने आपको दे दिया है, and now I'm saying that you have to increase the temperature of gas A, right, to increase temperature of gas A by unit degree, by unit। अब इसका टेम्परेचर आपको यूनिट डिग्री से इंक्रीज करना है। इफ आई से इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस ए बाय यूनिट डिग्री, कैसे पॉसिबल है ये, कैसे आप इसको इंक्रीज करेंगे, दैट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस बाय यूनिट डिग्री, कैसे करेंगे? ओके, यू विल सप्लाई हीट, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली आप हीट सप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कोई स्टॉपर नहीं है, दिस इज स्टॉपर। ये स्टॉपर क्या करेगा, इस पिस्टन को मूव नहीं करने देगा, तो दिस प्रोसेस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। यहाँ पे पिस्टन मूव कर जाएगा, जो प्रेशर होगा लगातार कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। तो जो आपका पहला केस है, केस 1, हियर दिस इज कांस्टेंट प्रेशर, केस 2 इज अ
कांस्टेंट वॉल्यूम। आप पहले केस में अगर हीट सप्लाई करते हैं, टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे? यू विल सप्लाई हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हियर यू विल सप्लाई हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज डेल क्यू। जो आप हीट सप्लाई करते हैं वो दो चीजों में जाती है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ जो हीट आप सप्लाई करते हैं, दैट हीट गोज इनटू टू थिंग्स। वन इज du प्लस डेल डब्ल्यू। जो हीट सप्लाई करते हैं आप, वो दो चीजों में जाते हैं। एक तो वर्क डन, तो सिस्टम से जो वर्क मिला आपको, और इंटरनल एनर्जी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, दिस इंक्रीजेस द टेम्परेचर, दिस इंक्रीजेस द दिस इंक्रीजेस द अब अगर सपोज कि मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट सप्लाई किया है, राइट, तो जो आपका डेल डब्ल्यू है दैट इज जीरो। तो जो डेल क्यू है दिस विल बी कांस्टेंट प्रेशर पे जो डेल डब्ल्यू है वो जीरो नहीं होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई करेंगे आप, राइट, वो दोनों में जाएगा। कुछ पार्ट उसका वर्क में जाएगा, कुछ पार्ट आपको हीट में जाएगा। अब सपोज कि ये जो इंक्रीज है, लेट्स से कि जो टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ गैस ए बाय यूनिट डिग्री, हमें जो एनर्जी सप्लाई करनी थी, राइट, जो हीट नीडेड थी is 5 किलो। लेट अस से दिस इज 5 किलो। ओके, इस केस वन में जो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने इसलिए लिया ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। इस केस वन में जो आपको एनर्जी सप्लाई की, ये 5 किलो जूल है डी। तो हमें जो सप्लाई करना है 5 किलो जूल आपने सप्लाई कर दिया। ये 5 किलो जूल पूरा का पूरा आपका चेंज इंटरनल एनर्जी में जाएगा, और ये सब कुछ आपका टेम्परेचर चेंज कर देगा, राइट। क्यों? क्योंकि आपका जो टोटल एनर्जी है दैट इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ दैट टोटल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो भी एनर्जी आप दे रहे हैं वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में जा रही है, और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वही आपका टेम्परेचर बढ़ाती है। और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अगर 5 किलो जूल चाहिए था, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको 5 किलो जूल देनी पड़ेगी, और इसका मतलब बाहर से आपको 5 किलो जूल करनी है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, इस पे तो आपको 5 किलो जूल चाहिए। टेम्परेचर अगर आपको यूनिट डिग्री से बढ़ाना है, एनर्जी तो आपको 5 किलो जूल चाहिए, लेकिन अब चूंकि इसमें वर्क भी होना है, सपोज लेट अस से कि 2 किलो जूल का वर्क होना है, जो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी दैट विल बी 7 किलो जूल। और द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि आपको 7 किलो जूल हीट आपने सप्लाई की, तो 5 किलो जूल हीट उसमें स्टोर होगी। 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो बाकी 2 किलो जूल बच गई वो आपकी वर्क के फॉर्म में आपको। दैट मीन्स कि जो हीट सप्लाइड है at constant pressure will be greater than heat supplied at constant volume. Heat supplied at constant, right? And what is heat supplied at constant pressure? That is mCp Pt is greater than mCv Pt. बाकी दोनों हमने डिग्री लिया है 1 डिग्री सेल्सियस यूनिट डिग्री। एम मास दोनों को हमने सेम लिया था, दैट मीन्स Cp from here you can write Cp is greater than C. From here you can simply write that Cp is greater than Cv. From here, simply you can write that Cp is greater than C. Okay, so this is your solution. Cp is greater than C. Okay, I have explained this thing in the lecture as well, but अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा कैसे होता है. This is the clear picture. I hope you got the Cp is greater than Cv. और भी तरीके होते हैं Cp Cv को लेकर प्रूव करने का, ये हमने थ्योरेटिकली बता दिया. ओके, यहाँ पे और भी तरीके होते हैं जब हम थर्मोडायनामिक रिलेशंस पढ़ रहे होते हैं, वहां पे भी आप Cp Cv वहां पे भी अप्रूव करते हैं. Okay, but this is the easiest way to understand why Cp is greater than C. This is the easiest way to understand why Cp is greater than C. This is the easiest way to understand why Cp is greater than C. Okay. Easiest way to understand why Cp is greater than easiest way to understand why Cp is greater than. Okay. I hope you got that. Okay. So this is Cp greater than Cp. If you have any doubt, you can ask me in the comments. Cp is greater than. Now
let us start heat transfer for various process. Let us quickly revise that. Heat transfer for various heat transfer for various heat transfer for various processes. First one is constant volume process. Constant volume process, right? अगर constant volume process है तो आपका जो heat transfer है, what will be the heat transfer? For constant volume process, what will be the heat transfer? Right? Del Q equals to du plus del W या फिर du plus pd du plus del Q equals du plus pdv. Volume constant है, that means del Q equals to जो हीट ट्रांसफर है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में सिर्फ वो पूरा का पूरा आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी में जाता है। और हमने अभी पढ़ा था कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ट्रांसफर इज mcv dt, दैट मींस du इज mcv। यहां से आपको मिल गया mcv इज mcv। अब आपसे पूछा जाए कि जो mcv dt है, दिस फॉर्मूला दिस इज वैलिड फॉर हमने इसको प्रूफ तो यहाँ से किया है mcv dt इक्वल्स टू du। इसको प्रूफ हमने यहाँ से किया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के, बट वैलिड फॉर एनी प्रोसेस। दिस इज वैलिड फॉर एनी प्रोसेस because valid for any process because internal energy is a property. Internal energy is a property because internal energy is a right. क्यों है ऐसा? हमने इसका डिटेल डिस्कशन किया होगा क्लास में। हियर वी आर जस्ट रिवाइजिंग दैट। दिस यू शुड रिमेंबर कि आपको कहीं पे किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको फाइंड करना है पॉइंट वन और टू, इस पॉइंट वन और टू के बीच में अगर आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है, दैट यू हैव टू फाइंड u2 minus u1, you will simply write mcv u2 minus, नो मैटर यहाँ पे प्रोसेस कौन सा है। अगर ये पीवी डायग्राम है तो ये आपका प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस तो नहीं है, आपको दिख रहा है प्रोसेस वेरी कर रहा है। चाहे जैसे आप चाहे चले, आप ऐसे भी जा सकते, राइट? आप चाहे जैसे चले गए, प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, राइट? दिस u2 minus u1, व्हाई? बिकॉज u2 minus u1 is a u2 minus u1 is a internal energy is a property। तो अगर ये प्रॉपर्टी है तो दिस शुड डिपेंड ऑन द एंड पॉइंट्स, टू और वन पे। कहाँ पे प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, सिर्फ पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, तो हर बार वो u2 minus u1 उतना ही आएगा। ओके, हम करेंगे क्या, प्रोसेस चाहे जो प्रोसेस आप ए से गए हैं या फिर बी से गए, उससे फर्क नहीं है। टू और वन के बीच में हम एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस लगा देंगे, एज्यूम कर लेंगे कि देयर इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम बिटवीन टू एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बिटवीन टू एंड वन, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बिटवीन टू एंड वन, ठीक? और उसका हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करेंगे, mcv t2 minus t1, दैट इज mcv। ओके, तो जो एक्चुअल प्रोसेस में है, एक्चुअल प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट विल बी द सेम। ओके, ये चीज हमने यहाँ पे भी यूज किया था, mcv t2 minus, दैट इज mcv t2 minus t2 minus even mcv t2 minus। प्रोसेस चाहे जो हो, आप हर बार वहां पे एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एज्यूम कर लेंगे और उस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की चेंज इंटरनल फाइंड कर लेंगे, दैट इज u2 minus u1 इज ऑलवेज mcv t2 minus mcv t2 minus। सेकेंड वन इज कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर का डिटेल डिस्कशन हमने किया हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, ये कैसे होता है इसका डिटेल डिस्कशन मैंने किया हुआ, फिर इस चीज का क्या मतलब है कि हमने इसको कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्यों प्रूव किया, इस चीज का हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। यू कैन वॉच द लेक्चर और यू कैन ज्वाइन मी ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वहां पे भी आप लाइव इस चीज को देख सकते हैं। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट इज कांस्टेंट प्रेशर?
जैसे आपने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हमने प्रूव किया है, वैसे ही कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए दिस इज चेंज इन एंथैल्पी, where H is enthalpy. Now what is enthalpy? H is U plus, या फिर H equals to U plus P, U plus P एक क्वांटिटी है, U plus P सिंपली उसको हमने एंथैल्पी राइट। और कांस्टेंट प्रेशर हीट ट्रांसफर इज एम सी पी डी टी। तो जो डी एच है, डी एच तो भी हम लिख देंगे एम सी पी, डी एच इज एम सी पी, डी एच इज एम सी पी। ओके, और ये फॉर्मूला भी जैसे आपका ये दिस फॉर्मूला इज आल्सो वैलिड फॉर, दिस इज आल्सो वैलिड फॉर एनी प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम हो, कांस्टेंट प्रेशर हो, कोई प्रोसेस हो, अगर आपको चेंज इन एंथैल्पी फाइंड करना है, यू सिंपली फाइंड एमसीपी dt, राइट। व्हाई? बिकॉज एंथैल्पी इज अ प्रॉपर्टी, एंथैल्पी इज अ प्रॉपर्टी, सिंस एंथैल्पी इज अ प्रॉपर्टी, तो आप जहां पे किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको H2 minus H1 फाइंड करना है, यानी एंथैल्पी फाइंड करना है, यू कैन सिंपली write like this and calculate the, right, you can simply you can simply write like this MCP dt, इसी दो पॉइंट के बीच। आपसे इससे मतलब नहीं है कि प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर है या नहीं है, ठीक। प्रूफ हमने इसको ऐसे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस लेके अलग से ले किया, यहाँ पे और भी तरीके होते हैं इनको प्रूव करने के, ये सिंपलेस्ट था तो हमने इसको दिखा दिया था क्लास में। ओके, तो बाकी इन सब चीज़ों का क्या मतलब है कि हमने इसको कांस्टेंट प्रेशर से क्यों प्रूव किया, इसको कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्यों प्रूव किया, राइट, इसका डिटेल डिस्कशन है हमारे पास, जो लेक्चर है अदरवाइज जो मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, उसमें भी आप। नेक्स्ट इज थर्ड प्रोसेस इज आइसोथर्मल, थर्ड वन इज प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जो हमने पढ़ा है, दैट इज डेल Q इक्वल्स टू du प्लस पी डी, टेम्परेचर इसको डेल डब्ल्यू लिखते हैं, Q प्लस डेल्टा। जो इंटरनल एनर्जी है, दिस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, दैट मीन्स अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो जो आपका du है, चेंज इंटरनल एनर्जी है, दैट विल बी जीरो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, दैट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। तो dq del q विल बिकम, जो भी आप हीट देंगे, जो भी आप हीट देंगे वो वर्क के फॉर्म में आपको। नेक्स्ट वन इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ऑल नो दैट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर, polytropic process, sorry, not polytropic, adiabatic। जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो बाय डेफिनेशन ही क्या है, डेल क्यू इक्वल्स, यहाँ पे हीट ट्रांसफर जीरो होना चाहिए, अब इसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे। फिफ्थ वन इज पॉलीट्रोपिक, फिफ्थ वन इज पॉलीट्रोपिक, फिफ्थ वन इज पॉलीट्रोपिक। What is the polytropic heat transfer? Fifth one is polytropic process, and what is the polytropic? What is the polytropic? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो हीट ट्रांसफर होगा वो होगा आपका, लेट मी राइट, गामा माइनस, जो डेल क्यू पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की होगा, दैट विल बी गामा माइनस n by gamma minus 1 and polytropic work transfer.
पॉलीट्रॉपिक वर्क. व्हाट इज पॉलीट्रॉपिक वर्क ट्रांसफर? कल हमने देखा था P1 माइनस P2 y. व्हाट इज पॉलीट्रॉपिक वर्क ट्रांसफर? दैट इज P1 माइनस. एक चीज और होती है पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट. एक पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट इज n-1. Polytropic specific heat is n minus gamma. N minus gamma minus n minus gamma n minus 1 into C. Okay, n minus gamma n minus 1, that is gamma is polytropic index and is gamma is adiabatic index and is polytropic index. Hope you know the sign convention. That this is obvious. You know the sign. Okay, so this is the quick reason of जो भी हमने पढ़ा था heat transfer को लेकर. This is our quick reason. इसके अलावा एक छोटी सी चीज और है यहाँ पर. तो स्पेसिफिक चीज के बारे में हमने देखा था. That is Cp minus Cv are where Cp is gamma times and Cp by Cv is gamma r by 1. C is r by gamma minus. जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए. Where r is gas constant, r is gas constant. The values है for air, r is 0.287 kilojoule per kg Kelvin. Cp is 1.005 kilojoule kg Kelvin. Cv is 0.718 kilojoule per kg Kelvin and gamma is 1.4. ये जो डेटा है ये आपको याद होना चाहिए. ये आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है या फिर गिवन नहीं भी हो सकता है. फॉर एयर you should always remember what is the value of R for air. What is the value of gas constant? That is 0.287 kilojoule per kg Kelvin. And for for Cp 1.005, Cv is 0.718. All those things you should remember for air. ये आपको गिवन हो भी सकता है और नहीं. ये आपको So I hope you got the point. Let's start with the problems now. Let's start with the problems. Here is the first problem. Okay. You have 1 minute to read this question and then try to solve. Then I will give you the solution. Okay. Just have to solve this. You just have to solve this. A thermodynamic cycle is composed of 4 processes. Heat added and work done in each process
are as follows. Process four process है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 5. आपसे पूछा गया है हीट एडेड और वर्क डन गिवन है, एफिशिएंसी बताएं, फाइंड थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल, you have to find thermal efficiency. You have to find thermal efficiency that has been missing from it. Find thermal efficiency. Check find the thermal. Just have to find. First 1 to 2, 0. Okay. Now what is thermal efficiency? Simple question है. What is thermal efficiency? What is thermal efficiency? 1 minus heat rejected by heat. या तो ऐसे कर सकते थे या हीट सप्लाइड एंड नेट वर्क फाइंड कर सकते थे, वर्क डन बाय द गैस, एफिशिएंसी फाइंड करने का तरीका ये भी होगा, वर्क डन बाय हीट सप्लाइड, व्हाट इज वर्क डन, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, आप उससे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 minus heat supplied by heat rejected, what is heat supplied to the gas, 80, right? Or this is 80, and what is heat rejected from the gas, it's 50, 30 by 80, right? 30 by 80, this is 30 by 80. 37.5, that is 37. यहाँ से भी आपने फाइंड कर लिया थर्मल एफिशिएंसी। अब वर्क डन से भी फाइंड कर सकते थे, वर्क डन से भी फाइंड कर सकते थे, व्हाट इज नेट वर्क बाय द गैस, दिस इज 50 एंड दिस इज 20 ऑन द गैस, गैस पे अभी आपको वर्क करना पड़ा 20 ऑन द गैस, दैट इज 30, हीट सप्लाइड इज 8। तो आपका जो नेट वर्क था आप ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, नेट वर्क दैट इज 50 पॉजिटिव माइनस 20, ये है आपका टोटल वर्क, नेट वर्क by heat supplied. Heat supplied is here only and that is 80. This is also 30 by 80 is 30. Also 37. Answer is 37 point. Question was simple कि आप कैसे find करते thermal efficiency, heat supplied by heat rejected, that is your answer. That is 37.5. 37.5. Next one. आपके पास दो स्टेटमेंट है। अब आई होप कि आपको पता होगा इंजीनियरिंग सर्विसेज कैसे लिखते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 is correct, and statement 1 incorrect, statement 2 is correct, and statement 2 is correct explanation of statement 1. That is option A. Option B, आई होप कि आपको पता है कि जो रीजनिंग एसेसमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग एसेसमेंट वो कैसे होता है। ऑप्शन ए जो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शंस ए 1 is correct, 2 is correct, and 2 is correct explanation of and this is option E, right? Option B is 1 is correct, 2 is correct, but 2 is not correct explanation of option B. Option C is 1 is correct, 2 is wrong. Option B, 1 is correct, 1 is correct, 2 is correct, right? 2 not explanation of 2 is not explanation of 2 is not the correct explanation of option C.
Statement 1 is correct, statement 2 is wrong. Option D, statement 1 is wrong, statement 2 is something like this. This is our which option is you have to choose the correct option. Have to choose the correct option. Specific heat and constant pressure is for an ideal gas is always greater than specific heat and constant volume. आपसे कहा गया है Cp is greater than Cv always, and that means this option is okay. Heat added at constant volume is not utilized for doing any external work. Is also correct and correct explanation of a statement A. That means A. Option is A. क्योंकि स्टेटमेंट वन में अभी हमने एक्सप्लेन किया था इस चीज को मैंने स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है और स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन राइट दैट्स व्हाई ऑप्शन इज नेक्स्ट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम्स अगर आपके पास दो सिस्टम है तो उनके बीच में स्टेटमेंट वन टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम्स दो सिस्टम के बीच में जो पोटेंशियल और टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए हीट इंटरेक्शन ऑफ कोर्स अगर दो बॉडीज हैं आपके पास बॉडी ए बॉडी बी या सिस्टम ए एंड सिस्टम बी अगर टी ए इज ग्रेटर देन टी बी तो आपका हीट फ्लो होगा फ्रॉम ए टू राइट दैट मीन्स कि दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए तभी आपका हीट ट्रांसफर होगा दिस मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट हीट ट्रांसफर टू ए सिस्टम inevitably increases the temperature of the system और किसी सिस्टम को आपने हीट ट्रांसफर किया है तो वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा नाउ इज दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट दैट यू थिंक इसको आपको सोचना है क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या have to give me answer quickly just think about this simple theoretical question just have to think about this and answer real quick पहला समझ में आ गया हीट ट्रांसफर हीट इंटरेक्शन का मतलब ये होता है थर्मल एनर्जी राइट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस थर्मल एनर्जी फ्लोइंग बिटवीन टू बॉडीज टू सिस्टम्स बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी आपका हीट फ्लो करेगी ओके फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर वो तो करेक्ट है स्टेटमेंट टू क्या हर बार अगर किसी सिस्टम को हमने हीट दिया तो क्या उसका टेम्परेचर हर बार इंक्रीज करेगा राइट इज इट करेक्ट और right answer is this statement is wrong क्योंकि जब पेज चेंज हो रहा होता है पेज चेंज ड्यूरिंग पेज चेंज आप हीट ट्रांसफर करते हैं राइट हीट ट्रांसफर करते हैं आप बट नो राइट बट हीट ट्रांसफर वहां पे लगातार करते हैं अगर आप पेज कर दो बट no change in temperature but no change in heat transfer is there but no change in temperature but there is no change in temperature but there is no change in right suppose जैसे आपको वाटर है अगर 1 atmospheric pressure के लिए at 1 atmospheric pressure जो वाटर है राइट ये लिक्विड स्टेट से वेपर में कन्वर्ट होता है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से लगातार आप हीट सप्लाई कर रहे हैं और लिक्विड से वेपर में वो कन्वर्ट होता जा रहा है लेकिन उसका जो टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस ओनली एट दैट टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस दैट टेम्परेचर इज नॉट चेंज दैट टेम्परेचर इज नॉट चेंज ऑलराइट दैट टेम्परेचर इज नॉट दिस इज ऑल next so this option here option is here the option is statement 1 correct statement 2 is wrong option is next one in an isolated system the heat transfer and the work transfer is always zero in an isolated system the entropy always remains constant that you have to think about that you have to think about क्या होगा एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वर्क ट्रांसफर हीट ट्रांसफर और एंट्रोपी तीन चीजों के बारे में आपको सोचना है व्हाट इज हैपनिंग फॉर हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर एंड
entropy change. Yes. First of all, what is isolated system? By definition, you have to find what is isolated system. Then you have to think about कि क्या होगा heat transfer, work transfer के साथ और entropy के साथ. Okay, that we have discussed in the class. That we have already discussed in the class. Think about. Okay, you have to think about this in here. What is isolated system? What is isolated system? Isolated system का मतलब ये होता है कि अगर इस सिस्टम को अगर आपने आइसोलेट कर दिया, ये सिस्टम है, राइट, इस सिस्टम को आपने आइसोलेट कर दिया, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई मास का इंटरेक्शन नहीं होता, मास इंटरेक्शन इज जीरो और एनर्जी इंटरेक्शन इज. हमने जो एनर्जी है इन थर्मोडायनेमिक्स वो दो टाइप में हो सकती है. वन इज द हीट, अदर इज द. अगर एनर्जी इंटरेक्शन जीरो है इसका मतलब हीट ट्रांसफर भी जीरो है और वर्क ट्रांसफर भी, राइट, तभी इस सिस्टम को आप कहेंगे दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम. In thermodynamics we study two kinds of energy interactions only. Two kinds of energy interactions only. One is the heat, other is the, one is the heat, other is the, right. One is the heat, other is the, one is the heat, other is the heat and heat and that is एक स्टेटमेंट तो करेक्ट है. इन आइसोलेटेड सिस्टम और हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर इज ऑलवेज वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. व्हाट अबाउट द अदर स्टेटमेंट? व्हाट इज अबाउट द एंट्रोपी? मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज है. जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स है, राइट, सिस्टम है यूनिवर्स, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम. या फिर मैं कह लूँ कि not just let us not use the term universe, it is just use the term isolate. अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो जो आपकी एंट्रोपी की हमने बाय डेफिनेशन बताया था कि दैट इज किसी भी चीज, किसी भी सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज है, यस, दैट इज डेल क्यू बाई, राइट, डेल क्यू बाई टी. अगर आइसोलेटेड सिस्टम है दैट मीन्स हीट ट्रांसफर इज जीरो. आइसोलेटेड सिस्टम दैट इज हीट ट्रांसफर इज जीरो. फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम दैट मीन्स जो हीट ट्रांसफर है दैट इज जीरो. दैट मीन्स जो आइसोलेटेड सिस्टम की जो एंट्रोपी चेंज है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू. ग्रेटर तब होगा, राइट, व्हेन प्रोसेस इज इरिवर्सिबल. एंड इक्वल साइन आप तब यूज करेंगे जब ये आपका होगा फॉर. ओके, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था क्लास में जब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस थिंग्स. दिस मींस ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है दिस इज रॉन्ग, दैट मींस ऑप्शन इज सी. स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, so statement 1 is correct, statement 2 is wrong. Okay, statement 2 is wrong. This case statement 2 is next one. You have 1 minute to read this question and try to think about this. This is a pure theoretical question. You should not take more than 1 minute to read and think about this question. Simple question. This is a simple.
An insulated container is divided into two compartments, A and B, by a thin diaphragm, while A contains a mass of gas at pressure P and temperature T. The B is evacuated. The diaphragm is punctured and the gas A rushes into the B, and the process is called pre-expansion. Right? By definition, मैंने आपको बताया था what is pre-expansion. What is pre-expansion? Right? Pre-expansion means expansion against vacuum. Expansion against vacuum. Expansion against vacuum is called pre-expansion. Means आपके पास दो चेंबर है, आगे ये A है और ये B है. This chamber is evacuated. This chamber is evacuated. This chamber is evacuated. और ये है किसी प्रेशर P और टेम्परेचर T. जब इस जब इस जो भी आपने पार्टीशन लगा रखा है, इस पार्टीशन को आपने हटा दिया तो ये जो गैस है इस चेंबर से दूसरे चेंबर में ये आपका मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा. दूसरे चेंबर से जो गैस है दोनों चेंबर मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगी. इन द प्री एक्सपेंशन वर्क ट्रांसफर इज right. In this case we have the first reference is here, that is du plus del w. Del w0 dq is 0, that is du plus del w, du plus del w. So du plus this is also that means du is 0, that means final internal energy equals to initial internal energy. For ideal gas internal energy is function of temperature only. Internal energy is function of temperature only. That means in that case, for ideal gas, internal energy is function of temperature only. Okay, that means कि आपका यहाँ पे from here you can write final temperature is equal to initial. Remember that कि यहाँ पे isothermal process, this is not isothermal process. Final temperature initial temperature तो same है, right? Final temperature equals to initial temperature, right? But this is not isothermal process, right? Isothermal process में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है isothermal, जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट प्रोसेस, जब तक पूरा प्रोसेस चल रहा होता है टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट. Right? This is not isothermal process. Why? Right? Because temperature changes during the process. Temperature changes during the process only. और एक बार प्रोसेस कंप्लीट हो गया, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया तो आपका चेंज होगा. ओनली फाइनल टेम्परेचर इक्वल्स टू इनिशियल. केवल फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर सेम है. सब कुछ इक्विलिब्रियम में आने के बाद जो फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर है सिर्फ वो सेम है, बाकी टेम्परेचर इन बिटवीन आपका वेरी करता है. दिस गोज समथिंग लाइक दिस. अगर आपने इसका टीएस डायग्राम बना दिया, अगर हमने इसका टीएस डायग्राम बनाया, दिस गोज समथिंग लाइक दिस. ये है Tf equals to Ti, and this is something like this. This process goes like this. This is initial entropy. This is final entropy. But entropy is increase करता है because this is a irreversible process. So entropy will increase. This is a irreversible process. Re-expansion is a irreversible process. Hence the entropy will increase. Okay. तो आपको ये समझ में आ गया कि आपने ये लिख लिया फाइनल इनिशियल टेम्परेचर सेम है, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी. व्हाई? बिकॉज दिस इज एन इरिवर्सिबल. प्री एक्सपेंशन है, प्री एक्सपेंशन इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो उसकी जो एंट्रोपी है दैट विल इंक्रीज. इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस. ओके, so this is a brief revision of pre-expansion. pre-expansion भी हमने देख लिया, यदि हमने देखा था पहले भी हमें.
तो सेम केस है, दिस इज फ्री एक्सटेंशन. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विसेज. नेक्स्ट प्रॉब्लम. Okay, you have 1 minute to read this question again and then try to solve and try to solve this. If the thermoelectric power plant produces 1000 megawatt of power, produces, right, this is work done, this is work done, that work done is positive, work done is 10 megawatt. If the coal releases 900 into 10 to the power 7 kilojoule per hour of energy, right? If the coal releases this much of energy per hour, then the rate of which heat is rejected from the power plant is this you have to find. कितनी एनर्जी वहां से रिलीज हो रही है, कितनी एनर्जी वहां से रिलीज हो रही है, दिस you. The rate at which the heat is rejected from the power plant. This is work done from first law, from energy conservation simply, from energy conservation. अब फर्स्ट लॉ भी एनर्जी कंजर्वेशन ही है वैसे तो. Heat supplied, that is work done plus heat rejected, right? Simply किसी भी सिस्टम जो आपने हीट किया तो हीट रिजेक्टेड इज, आपको जो फाइंड करना है हीट रिजेक्टेड इज वर्क माइनस, हीट रिजेक्टेड इज हीट सप्लाइड माइनस वर्क, heat supplied minus work, heat supplied minus, this is heat supplied minus work, heat supplied minus work. Okay, now heat supplied कितना है पर आवर, किलो मेगावाट है तो हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे. हीट सप्लाइड QS इज 900 इंटू 10 टू द पावर 7 किलो जूल पर आवर. ओके, किलो जूल पर आवर. इसको हम किलो जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे किलो वाट में, वी विल डिवाइड बाय 3600, दैट विल बी किलो वाट. उसको हम मेगावाट में कन्वर्ट कर लेंगे एंड दैट विल कम अराउंड 2500 मेगा. ओके, 2500 मेगावाट. Okay, so that is 2500 minus 100, sorry, 2500 minus 1000, that is 1500 megawatt. Answer is 1500. Okay, this is 1500 megawatt. Okay, this is 1500 mega. This is 1500. This is 1500 mega. सिंपल आंसर था, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन वर्क डन आपको गिवन था, कितना हीट आपने सप्लाई किया ये गिवन था, इसकी बस यूनिट कन्वर्ट करनी थी आपको इन द मेगावाट. जो गिवन था दैट इज किलो जूल पर आवर, आपको जो कन्वर्ट करना था किलो जूल पर सेकेंड या फिर मेगा जूल पर सेकेंड. तो पहले आपने 3600 से डिवाइड कर दिया, आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद आपने इसको सिंपली मेगावाट में कन्वर्ट किया 10 to the power 6, दैट इज मेगावाट. दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉब्लम. Right? If a 4 kilowatt 20 liter water heater is switched on for 10 minutes, the heat capacity Cp for water is 4 kilojoule per kg Kelvin. Assuming all the electric energy has gone into heating the water, the increase in water temperature is, the increase in water temperature is, at the increase in water temperature,
Okay, the increase in water temperature. Okay, just you have to just find that. Okay, you have to find the answer. 4 kilowatt 20 liter water heater is switched on for 10 minutes. और आपको ये assume करना है that assuming all the electrical energy uh, has gone into the heating of the water, heating the water, then increase in water temperature. Simple. 4 किलोवाट मीन्स किलो जूल पर इतना किलो जूल पर सेकेंड इसका पावर है, इतनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है. यू हैव स्विच्ड ऑन फॉर 10 मिनट्स. दैट मीन्स और जो सारी की सारी एनर्जी है दैट इज गॉन इनटू द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर इंक्रीज करने में. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि जो भी हीट सप्लाइड है दैट इज इक्वल्स टू and this is mcp delta t. Why mcp delta t? Because all these things happening at the constant pressure, that is atmospheric pressure. Power आपका 4 किलोवाट 4 किलो जूल पर सेकेंड एंड हाउ मेनी सेकेंड फॉर 60 सेकेंड. और m given as this is for 20, cp is given as 4, delta t is given as 4 into 10 into 60. Okay, so that is what is the delta t? Delta t is delta t 30 degree. Delta t is 30 degree. This is delta degree Celsius. All these are degree. 30 degree Celsius is the answer. Answer is 30 degree. Okay, problem. Answer is 30 degree. आपसे कहा गया कि जो भी आप पावर दे रहे हैं, जो भी एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं, वो उसका टेम्परेचर में कन्वर्ट करो. हीट कैपेसिटी वर्ड इज ऑल द इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर है gone into heating the water. Okay, increase in water temperature. Increase in water temperature. MCP. Okay, this is our answer. So the change in internal energy in a reversible process occurring in a closed system is equal to heat transfer if the process occurs at. Simple question. That question हमने किए थे अभी. Let you quickly tell me the answer. Change in internal energy you have to find. अभी हमने डिस्कस किया था. Change in internal energy is heat transfer at constant volume. That is MC. Heat, right, at constant. Change in internal energy in a reversible process occurring in a closed system is equal to heat transfer if the process occurs at constant volume, right? Constant volume. Simple. First law से del q equals to du plus p dv. अगर constant volume process है तो p dv is 0. That means जो heat transfer that is equals to change in internal energy that is at constant volume. That means that is at constant. Which one of the following phenomena occurs when gas in a piston cylinder assembly expands reversibly at constant pressure? Reversibly at constant.
Which one of the following phenomena occurs when the gas in a piston cylinder assembly expands reversibly at a constant pressure? ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। अब अगर ये पिस्टन एक्सपैंड कर रहा है, अगर ये पिस्टन एक्सपैंड कर रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट प्रेशर, दैट मींस वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस वर्क इज, वैसे दिखा सकते हैं कांस्टेंट। अगर पीवी डायग्राम में बना लिया सपोज, ये अगर आपने expand कर रहा है, that means volume is increasing from 1 to 2, that means this is the work done and this work done is positive, this is positive work, right, this is positive work। इसका मतलब कि जो आपने हीट है वो भी हीट आपने सप्लाई किया। अगर आपको वर्क डन मिल रहा है दैट मीन्स आपने कोई एनर्जी दी होगी, तभी आप वर्क डन ले सकते हैं, अदरवाइज आप एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते। इसका मतलब कि आपने कुछ ना कुछ एनर्जी उसको सप्लाई किया होगा, तभी आपको वर्क डन मिला होगा, दैट मीन्स heat is added to the system, that means simply heat is added, right, otherwise आपको वर्क नहीं मिलेगा हीट जब तक आप उसको ऐड नहीं। आपको वर्क मिल रहा है इसका मतलब आपने सिस्टम को हीट दिया होगा, राइट, क्योंकि सिस्टम हीट लेके कोई एनर्जी लेके ही वर्क आपको दे सकता है, सिस्टम खुद से वर्क आपका नहीं दे सकता, वर्क आपका खुद से वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट है, वर्क मिल रहा है, दैट मींस यू हैव सप्लाइड द हीट, हैव एडेड द हीट टू द सिस्टम। I hope you got the, hope you got the simple question, this is also from engineering services examination। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए सिलेक्ट किया ताकि जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है जिसको आप राइट, ये एक बार फिर से आपको रिफ्रेश हो जाए, राइट, और द थ्योरेटिकल जो थियरी है, जो थियरी है वो थियरी टॉपिक से रिलेटेड जो भी थियरी है वो एक बार रिफ्रेश हो जानी चाहिए, वो एक बार रिफ्रेश हो जानी चाहिए, और वो रिफ्रेश प्रॉब्लम के थ्रू होती है, इसलिए मैंने आपको सिंपल से प्रॉब्लम। For a closed system at constant composition, the difference between the net heat and work interaction, net heat and work interaction is identifiable as the change in, identifiable as the change in, सिंपल आपसे ये कहा गया है del q equals to du plus w. What is del q minus, from the first law this is q, del q minus del w energy, that is changing internal. Simply from the first law, from the first law of thermodynamics, first, from the first law of thermodynamics, from the first law of thermodynamics, del q equals to du plus L. Del q minus del w is the equation. What is the okay. Next. Okay, you have 1 minute to read this question and then try to solve another 1 minute.
ओके, Q1 is heat rejected, Q2 is heat Q1 is heat received in kilojoule per minute, यूनिट का आप ध्यान देंगे। Q2 is heat received in kilojoule per second, या फिर ये भी किलो watt। W is work output in kilowatt। इन दोनों की यूनिट सेम है, इसकी यूनिट आपको किलोजूल पर मिनट में है। Q1 आपको अलग अलग प्रोसेस गिवन है, ये आपका सीरियल नंबर गिवन है, सीरियल नंबर अलग अलग कंडीशन आपने ली, एक बार हीट रिजेक्टेड, हीट सप्लाइड, वर्क, हीट सप्लाइड, हीट रिजेक्टेड, वर्क, हीट सप्लाइड, हीट रिजेक्टेड, वर्क, ऐसे आपका चार प्रोसेस सीरियल नंबर एलिमेंट कह सकते हैं, चार है। उस केस में आपसे पूछा गया है कि अगर हीट रिसीव्ड दैट इज अगर Q1 2000 हो जाए तो वर्क आपका आउटपुट कितना होगा, तो आपका वर्क आउटपुट कितना होगा अगर आपने हीट जो सप्लाई किया है वो 2000, 1500 किलोजूल पर मिनट में, 1500 किलोजूल पर मिनट में है तो वर्क आपका 8.2 था। जब 1600 है 8.75, 1700 9. 1800 9.85, जब 2000 होगा तो कितना होगा वर्क डन आपसे। Now let us find the efficiency. Now what is the efficiency? Efficiency is work by Q1 heat supply। तो ये तो आपका सेम होना चाहिए। जो वर्क है आपका 8.2 by 1500, पहले वाले सीरियल नंबर वन से, सीरियल नंबर वन से अगर आप ले लिया, अगर ये है दिस शुड बी इक्वल टू सॉरी दैट शुड बी वर्क बाय 2000, राइट। आपका ये एफिशिएंसी तो सेम होगी, अगर एफिशिएंसी सेम होगी तो W बाई Q1 8.2 बाई 1500, 2000 बाई, और इसको आप कुछ और भी लिख सकते हैं 9.3 बाई 1700 लिख सकते हैं, 9.3 बाई 1700 लिख सकते हैं, 9.85 बाई 1800 लिख सकते हैं, ये सब कुछ सेम होना चाहिए। किसी एक से आप फाइंड कर लेंगे एंड यू विल फाइंड द आंसर। एंड दैट इज, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे दैट यू विल फाइंड 10.94 किलो। right, 10.94 किलो। मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया, इस किलोजूल पर मिनट को किलोजूल पर सेकंड को किलोजूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते थे आप, ओके, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये भी किलोजूल पर मिनट में है, ये भी किलोजूल पर मिनट में है, तो आपका इससे भी कैंसिल हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी आंसर बनाने की। वाइज आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, हम किलोजूल पर मिनट टू किलोजूल पर सेकंड, आप चाहते हैं तो इसको कन्वर्ट भी कर सकते थे। सिंपल आपकी जो एफिशिएंसी है, जो भी एफिशिएंसी हो तो सेम होनी चाहिए, तो आप किसी से भी ले सकते हैं। आप अगर चाहें तो 9.85 डिवाइड बाई 1800, राइट, उससे डिवाइड कर लेते हैं तो भी आपका 9.4। यहाँ पे अगर आप 9.85 यूज कर लेते 9.85 हीट सप्लाई 1800 तो भी आपका आंसर नहीं है, कोई भी आप यूज कर लेते आपका आंसर सेम होता, दैट इज 10.94 किलो। जब 2000 सप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 10.94 इज करेक्ट ऑप्शन इज डी इज द so I hope you got the I hope you got it। Next one, सिंपल क्वेश्चन है, पैडल व्हील है, ये पैडल व्हील आपको रोटेट कर रहा है, स्टीयरिंग एक्शन है, यहाँ पे जो वर्क दे रहे हैं आप दैट इज 9000 किलोजूल and the heat transfer from the surrounding to the tank is 3000, from surrounding to the tank is 3000। तो द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम, यहाँ पे जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो पीडीवी वर्क यहाँ पे जीरो, पीडीवी वर्क यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे पीडीवी वर्क नहीं है लेकिन स्टीयरिंग एक्शन है और उसका जो वर्क है दैट इज 9000 किलो जूल।
जो एक्सटर्नल वर्क है यहाँ पे वो होगा 9000 किलो जूल, क्योंकि स्टीयरिंग एक्शन से कोई वर्क, सॉरी उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अलग से कोई वर्क नहीं है यहाँ पे, पीडीवी वर्क इज जीरो यहाँ पे, लेकिन आपने जो सप्लाई किया वो वर्क होगा दैट इज 9। नेक्स्ट, okay, you have 1 minute to think about this question and try to. The internal energy of a certain system is given as function of temperature alone and is given by the formula E equals to 25 plus 0.25 T kilo Joule. If the work done by it per degree temperature increase is 0.75 kilonewton meter. Okay, that is kilojoule. The heat interaction per degree temperature is in kilojoule. Heat interaction per degree temperature increase in kilojoule. Right. Here this question we have to try and solve. You have 1 minute to solve this question. Then I will give you the. Then I will give you the. Internal energy given है E as function of temperature. Sorry, yes, function of temperature. P is temperature per degree temperature. Heat interaction per degree temperature change. Per degree temperature increase. Let us use the first law. Let us use the first law of thermodynamics. First law. Yeah, first law. What is part of analysis? Del Q equals to dP plus del. Per degree temperature change आपको find करना है. That means अगर del Q by del T find कर ले per degree temperature, that means dP by plus del W by. What is dP by dt? E given है आपको 25 plus 0.25. Then what is dP by dt? 0.25, right? 0.25 kilojoule. This is whole thing in kilojoule. dP हो गया आपका. Now del W by del T work interaction is given 0.75 at per degree temperature change. Per degree temperature change, this is given. Per degree temperature change आपको given है and that is 0.7. तो रख लेंगे तो आपको जो del Q by T मिल जाएगा 0.5 plus 0.75 1 1.0 kilojoule, and answer is 1.0 kilojoule. The answer is सिंपली आपको कहा गया था वर्क डन पर डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज इज 0.75.
किलोलीटर मीटर किलो जूल। एनर्जी आपको गिवन था टेम्परेचर के फंक्शन में, उसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया टेम्परेचर के टर्म में, टी बाई डी टी, एंड दैट इज 0.25, दोनों का ऐड कर लिया, दैट विल गिव यू द डेल क्यू बाई डी टी। इंटरेक्शन, हीट इंटरेक्शन पर डिग्री टेम्परेचर चेंज, डेल क्यू बाई, ये आपको यहाँ से R is the characteristic gas constant आपको फाइंड करना है। You have to find characteristic gas constant. Characteristic gas constant. Characteristic gas constant. Characteristic gas. Characteristic gas constant. ये आपको फाइंड करना है, and you have to arrange these in decreasing order. Decreasing order for just try this question. Okay. Simply you will try this. Okay. You have to simply find this. Now we are going to find R equals to R bar by, where M is molecular weight. Molecular weight. R bar is universal gas constant, called universal gas constant. This is our universal gas constant. R bar is universal gas constant. Value is 8.314 kilojoule per kilomole Kelvin. Kilomole Kelvin. 8.314. अभी इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, उसका जो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा for H2 molecular weight is 2, for N2 this is 28, for air this is 29, for CO2 this is 44, right? ये जो है आपका मॉलिक्यूलर वेट है सबका, हाइड्रोजन का 2, नाइट्रोजन for N2 that is 28, air is 29 and CO2 कार्बन डाइऑक्साइड that is 40. R बार तो सबके लिए कांस्टेंट है, जिसका H ज्यादा होगा सॉरी जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका जो गैस कांस्टेंट है वो कम है, ओके सिंपली। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका गैस कांस्टेंट है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है दैट मीन्स का जो गैस कांस्टेंट है दैट विल बी, ओके दैट मीन्स अगर आप देखें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखाना है आर को, तो जो आर एच टू है वो ग्रेटर होगा आर एन टू से, एंड आर एन टू विल बी ग्रेटर देन आर एयर, एंड आर एयर विल बी ग्रेटर देन आर, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट, दिस इज डिक्रीजिंग। आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यू कैन सिंपली फाइंड फ्रॉम हियर आल्सो, यू कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकली आल्सो, न्यूमेरिकली भी देख सकते हैं और यहाँ से भी आप इस चीज को फाइंड। Okay, so I hope you got all these things. This is the correct answer at H2N2 air and C. H2N2 air and
तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका गैस कांस्टेंट. ओके, so I hope you got all these things. Once again, let me announce that I'm going to start thermodynamics on the Unacademy app, right? You can follow me there by the name Ravi Prakash. You can search me there over there and find my lectures, and you can watch that also. You can watch that. Okay, you can start the live lectures. अदरवाइज जो रिकॉर्डेड सेशन है वो आपके इस चैनल इंजीनियरिंग लाइव पे आपको प्लेलिस्ट फाइंड करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की, एंड यू कैन फाइंड जो रिकॉर्डेड है. जो रिकॉर्डेड सेशन देखना चाहते हैं, अगर आप रिकॉर्डेड सेशन देखना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग लाइव चैनल पे वो सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं. इंजीनियरिंग लाइव चैनल पे अवेलेबल है. दैट इज अगेन यू हैव टू फाइंड प्लेलिस्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स by the name Ravi Prakash. Because you have to find the playlist on Engineering Lab channel, playlist of thermodynamics, and you can watch all the lectures if you want. किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए या फिर पूरा सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप पूरा कंप्लीट सिलेबस वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन मी लाइव ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. Okay, so I hope you got all the points. Okay, you got the point, and please subscribe to this channel and also get plus subscription on Unacademy. Use this code, referral code. Use this referral code Ravi PY. Use this referral code Ravi PY. Okay, to get 10% discount. To get 10%, 10% of the discount. Right. To get 10% of discount on Unacademy. लर्न जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप प्लस भी ले सकते हैं. यू कैन गेट प्लस सब्सक्रिप्शन और iconic. Whatever you feel is suitable for you, you can go for that. But iconic is best because there you get a personal coach जिनके साथ आप वन टू वन डिस्कशन कर सकते हैं अपने डाउट्स के बारे में, अपने डाउट्स के रिगार्डिंग, एंड यू कैन क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स, एंड दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग बेटर. Okay, so thank you very much.